And you will go first, right, Dr. Rao? You'll go first. Actually, I'm modifying. See, I cannot speak on the same platform in the same level as you. So what I'm going to do is I'm going to give you leading questions which you will discuss, and I will chip in to the best of my abilities. But the focus It's today, more like Vandana, a dialogue. it is more like a dialogue. It is Perfect. more like a dialogue. So we will do that. Okay. हाँ, सुधीर जी आप शुरू कर दीजिए. आज की प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मैं आज के प्रोग्राम के लिए जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, तो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी पूरे भारतवर्ष में श्री श्री एग्रीकल्चरल ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारे प्रोग्राम लिए गए, जिसके माध्यम से हमने न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया और उसी के साथ साथ किसानों को भी इस लिंकअप में कैसे जोड़ा जाए इसके बारे में अवेयरनेस किया. तो आज एक कंक्लूडिंग प्रोग्राम है आज का. तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि श्री श्री एग्री आर्ट ऑफ लिविंग के चेयरमैन डॉक्टर प्रभाकर राव सर जी और वंदना शिवा जी, जो हमेशा ही हमें जब भी गाइडेंस की जरूरत होती है, जब भी हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तो अवेलेबल रहती है. तो सबको मैं एक इंसिडेंट भी बताना चाहता हूँ इसी माध्यम से कि मुझे लगता है लगभग 7-8 साल पहले गुरुदेव का जालना एक टूर हुआ था. गुरुदेव खुद आए थे जालना में. उन्होंने कहा था कि किसानों से मुझे मिलना है. तो तब हमने वंदना शिवा जी से संपर्क किया था. उनको सब बताया था कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, और बिना कुछ समय गवाए उन्होंने तुरंत ही इस प्रोग्राम को हाँ कहा था. और गुरुदेव के साथ साथ वंदना जी ने, मुझे लगता है लगभग 35,000 से भी ज्यादा किसान थे वहां पर, उन सबको संबोधित करके. और वंदना जी, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तब आपने जो बीज बोया था जालना में, उसका बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमें देखने को मिलता है. क्योंकि जिस जगह पर ये प्रोग्राम हुआ था वहां पर बहुत बड़ा एक आश्रम बन चुका है, जहां पर नैसर्गिक खेती के बारे में बहुत सारे कोर्सेस रेगुलर बेस पर चलते हैं. वहां पर सीड बैंक का भी निर्माण हुआ है, जो देशी सीड बैंक है. तो ये बताते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है. आज के प्रोग्राम के लिए जो सभी गेस्ट हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं. डॉक्टर प्रभाकर राव सर जी चेयरमैन है आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री एग्री ट्रस्ट के. डॉक्टर वंदना शिवा जी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं. उसी के साथ साथ SSIAST आर्ट ऑफ लिविंग ट्रस्ट जो है श्री श्री एग्री, उसके अंकुश दादा भी आज प्रोग्राम में है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं. उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के सभी जो जोनल कोऑर्डिनेटर्स है, टीचर्स है श्री श्री एग्री के, उसी के साथ साथ जो फार्मर्स है, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. और हम आज बहुत उत्सुक है ये डायलॉग सुनने के लिए कि डॉक्टर राव सर जी और वंदना मैम के बीच में जो हो रहा है, जिससे हमें सच में अपेक्षा है कि इससे बहुत अच्छा कुछ निकल के आएगा किसानों के लिए, और साथ साथ जो विष मुक्त अन्न जो खाना चाह रहे हैं उनके लिए भी. तो इसके आगे का सत्र सभी का स्वागत करते हुए, इसके आगे का सत्र मैं अरुण राठौड़ जी है उनको सौंपता हूँ. आगे का सत्र वो प्रारंभ करें. अरुण राठौड़ जी. जय गुरुदेव. और before we start the session, I want to really introduce Dr. Vandana Shiva. She is a globally recognized environmental activist, and पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन एंड सोशल जस्टिस के ऊपर ये बहुत स्ट्रांगली अपने व्यूज रखती हैं. नवधान्य नाम की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन शी इज रनिंग, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट नेटिव सीड वेराइटीज की रक्षक ऑर्गेनाइजेशन है. She has been promoting organic farming, and also she has been addressing the challenges of corporate controlled agriculture. तो जो हम भी कई बार इसकी बातें करते हैं कि प्राकृतिक खेती के क्या फायदे हैं और क्यों आज की खेती है उस पर बड़ी बड़ी कंपनीज जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. इन टॉपिक्स को डॉक्टर वंदना शिवा ने पूरे ग्लोबल लेवल पे बहुत स्ट्रांगली उठाया है. वी आर वेरी थैंकफुल टू हर फॉर दिस. शी इज ऑल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर, और अलग अलग टॉपिक्स पे, आई मीन ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज एंड द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल एंड वुमेन, ऐसे टॉपिक्स पे उन्होंने 20 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हुई हैं. मोर इम्पोर्टेंटली जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इज शी हैज बीन एबल टू ब्रिज द गैप बिटवीन इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स.
जो कि बहुत डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के बहुत ही ज्वलंत प्रकृति से रिलेटेड मुद्दे वो उठाती हैं, सोशल इश्यूज पे वो बहुत ओपनली बात करती हैं। सो ऑल आई कैन से इज वी आर वेरी लकी टू हैव हर with us today, and Dandvat Pranam to you, Dr. Vandana Shiva. I'm very happy that we are sharing this stage with you today. And with her, we have Dr. Prabhakar Rao. He is the chairman of SSIAST Trust. He is a very well-known landscape artist. Very huge government projects he has undertaken and delivered. We are very fortunate to have him as my guru today. He is the one who introduced natural farming to me, and since then I've been practicing it. So I'm more than excited to see what happens today. So without taking much time, over to you. I'm really looking forward to it. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Arun. Thank you. And Vandana ji, you know, when I hear of the many tags that are given to you, there is one that fascinates me, and you are described, and I read this even in your Wikipedia page, as an eco-feminist. You know, and it's such a beautiful term. And the way I feel that you have taken this ecofeminism to another level to create awareness, I would like to start today's discussion on this particular aspect of your initiative, where I would like you to focus on how do you see the role of women towards furthering sustainable agriculture on this planet, and how do you relate yourself to this term ecofeminism? Thank you so much, Dr. Rao, and to everyone who has joined, greetings. I wrote a report long ago, 91, for the FAO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations. And they had wanted me to write on women in agriculture. And by the time I finished my studies and research, I realized that most farmers in India are women, and most farmers of the world are women. But even more importantly than that, it's not just the fact that they are large in numbers, but the farming they do is on the small scale, because that's the place where they're still farming. They do farming with biodiversity. They do farming for the health of their children. When I started Navdanya, and I want to just mention, because Arun introduced Navdanya, you know, when Gurudev started to think of the agriculture side of things, he sent all, you know, the new group of rural development people, all of them came and stayed at the Navdanya farm to learn about ecological farming. And when I started Navdanya, I'd be going to the villages to first know what seeds people were using, and to encourage them to keep saving their native seeds and growing their indigenous crops. And we started saving millets 35 years ago. And the women would whisper to me and say, of course, you grow the millets. Of course, I grow vegetables for my children. If I was growing the commercial crops, who would feed my kids? So 80% of the food today comes from small farms. The majority of farmers on small farms are women, particularly in countries like India, but countries in continents like Africa, all of Latin America. And the role of women in sustainable agriculture is that they relate to nature as partners. Now, they don't come with the spirit of mastery and domination, which grew with colonialism, which grew with what is called the scientific revolution, and I would call it the unscientific regression, because for any scientific approach to say nature is dead, you didn't get how nature works. Nature is creative, nature is living, nature is self-organized. And women who are declared the second sex, passive, objects to be exploited, they too are the foundation of all creative production, not just in terms of food, but in terms of the economy of care. So for me, that's ecofeminism.
the creativity of nature, the creativity of women, working together for the benefits of all life, including all human life. So beautifully articulated, Dr. Vandana. And I think you symbolize that that Shakti power, you know, that is so evident, you know, when I've met you so many times. Every time it just, you know, it hits me, you know, it's so powerful. That's wonderful. Now, the other question that you have, because you mentioned something very beautiful. You said scientific revolution or unscientific regression. And I think that's a beautiful play of a fact that one be overlooked so much. Now, the scientists who brought in the green revolution into the world and even into India, by dint of circumstances, I was one of the generation of scientists who brought green revolution into India. We were given a mandate at that time that we have to create food security in India, which meant we have to increase the yield per acre. This was the mandate that was given by the government. How much it was influenced by other agencies, I will not comment, but that was the mandate given to the scientists. And I think the scientists did a fair job of contributing to that mandate which said increase yield. However, my question to you, and you have talked about this in several platforms, suppose the mandate had been give the nation nutritional security. Instead of yield, give me nutrition per acre and not yield per acre. Would science in India or agriculture in India have taken a different turn, or do you think we would have been still here as we are today? Your thoughts on this, Dr. Vandana? Yeah, I think you've addressed the heart of the issue. Now, of course, the leading scientist from India, you know, the person who really pushed it was Mr. Borlaug, Dr. Borlaug. And he doesn't ever talk about feeding India. He talks about selling fertilizers. As I've written in my book, The Violence of the Green Revolution, he basically says, if I was a parliamentarian, I'd get up every 5 minutes and say, give me more fertilizers, give me more synthetic fertilizers, give me more. So the real mandate was the leftover war chemicals, which included fertilizer, because the same factories using the Haber-Bosch process, using fossil fuels, fix atmospheric nitrogen to then make ammonia and ammonium nitrate. The same process then makes explosives and bombs. That's why we have so many nitrogen bombs and fertilizer bombs. And the same process makes nitrogen fertilizer. And as you would say, the focus was increase the yield. I want to quote from Dr. Swaminathan, where he honestly lays out what this was all about. He says, high-yielding varieties of wheat and rice are high-yielding because they can use efficiently larger quantities of nutrients, more fertilizer, and water than earlier strains, 10 times more water from my research, which tended to fall or lodge if grown in soils with good fertility. They thus have a harvest index. That is the ratio of the economic yield to the total biological yield. So the biological yield is not being increased. The proportion of the grain that will go to the market is being increased, but something else is shrinking because the plant is the straw as well as the grain. We need the straw to feed the soil. We need the straw to feed the animals. We used to use a lot of straw to make a housing. And then he goes on, higher ratio of economic yield to the total biological yield, which is more favorable to man. So he clearly says, we're doing this for man. But as our literature teaches us, as our knowledge teaches us, food is the currency of life. And everything is food, and everything is something else's food. The Taittiriya Upanishad, the best writing, short little paras on the ecology and spirituality and dharma of food. Dr. Swaminathan then goes on to say, in other words, if a high-yielding strain and an earlier tall variety of wheat both produce under a set of conditions
1,000 kilograms. They produce the same biological yield. Food for animals, food for humans. The high-yielding strain partitions it into 500 units of grain and 500 for straw. The tall variety, on the other hand, gives you 300 units of grain and 700 for straw. Now, take this further. When we've depleted the straw and we've depleted the food for the soil, your soil starts to degenerate. And over time, the production goes down, including if you add fertilizers, more fertilizers have to be added. And this declining yield ratio is also showing the hugely punishing factor in Punjab, where the graph of productivity is collapsing like this. If we had done agriculture the way we've done it over centuries, if we've done agriculture the way our amazing texts teach us, we've done agriculture the way Sir Albert Howard, who was sent to India to improve agriculture, and he came as a good scientist. His soils are fertile. There are lots of insects, but no pests. And I'm going to turn the pest and the Indian peasant into my professor. So he wrote the book Agricultural Testament based on indigenous knowledge of farming. And that became the textbook for organic farming. Of course, we have now many names of describing farming with nature. Some call it permaculture, some call it biodynamic, some call it agroecology, some call it regenerative, some call it natural. But at the end of the day, it's about farming with the laws of nature. And then what are the laws of nature? First, the law of nature is diversity. Nature does not grow monocultures. She grows diversity. So farming with diversity, farming as if we are growing a forest. So our indigenous systems always grew diversity. Navdanya was a name I learned from a tribal peasant in the Birappan lands when I'd gone for early seed collections on the border of Tamil Nadu and Karnataka. And he was growing 9 crops. And I said, wow, you're growing 9 crops. And he just turns around and gives me this discourse on Navdanya, how the 9 planets, the 9 crops in the field, and the diversity of food and nutrition we need for our gut microbiome. I mean, he didn't say the gut microbiome, for human health. He says it's one harmony, it's one continuum of health. And I'm growing that health. I'm taking care of the cosmos. And that is the powerful philosophy and science that has guided our agriculture. When you ask if we put nutrition security rather than yield, but that's the work I've done ever since I realized yield only measured a monoculture product and a part of a plant. So it was part of a system. And it only measured what left the land to go to the market. It didn't see how the land was. So it had no indicator to measure truly regenerative fertility. It didn't have a measure of what's the quality of food. Today, we know, I have so many papers on this, that we are losing nutrition. We are losing nutrition at very, very high levels. And 70 to 80% of the nutrition is gone from chemically fertilized soils. We are not growing food, we are growing commodities. We are growing mass that's measured on a taraj. But that's not food. Food is nourishment. Food is the gift that the soil gives us. And the plants have it. And then we eat it. And that nutrition is what makes us. So you can eat all the junk food of the world. You will be a very, very sick person. You can eat lots and lots of nutritionally empty food. I have worked with scientists. For example, scientists in Italy have measured that the old varieties of apricot, 1 apricot is equal to 25 modern varieties of apricot. The modern varieties look bigger, they weigh more, the yield is more, but in terms of nutrition, they're empty. That's why in Navdanya, we shifted to measuring nutrition per acre. And we did a whole report called Nutrition Per Acre. And we can feed 2 times India's population if we protect our diversity, 2, the diversity of our native seeds, which are more, we just finished a study
on the diversity of nutrition in our indigenous rice varieties and compared it to the market rice that's being sold, which is totally nutritionally empty. We are becoming malnourished because we are not growing nutrition. But the third very important factor is it's a healthy soil that grows nutritious crops. And when the soil is impoverished, our food is impoverished of nutrition. So we do need to shift in two ways to the kind of thinking that India has gifted the world. First, the thinking of Bahuda, the diversity. And the second, the relationships between the soil and the plants and our health. And we cannot afford to lose this deep knowledge because nutritionism that merely measures a few nutrients and not the relationship doesn't still tell you how healthy the food is, because health is a relationship, and health through nutritious food is a relationship which comes from the care for the soil, which is natural farming, organic farming, regenerative farming, through the care of the plants in diversity, and then the beautiful process of recognizing that food is sacred. And that's why we respect food. We say Annam Brahma. We don't say it's just this much kilograms of stuff. We say Annam Brahma. So very aptly articulated again, Dr. Vandana, which brings us now to what is happening with our land races and heirloom varieties. And many of the audience here are very familiar with Art of Living's work in reviving an ancient variety of wheat, which Gurudev actually named as Sona Moti. It's actually a Triticum sphaerococcum, and an ancient race from the northwestern parts of India, which is given as prasad in one of the ashrams outside Ludhiana, Ludhiana. And what we found was, I mean, he named it Sona Moti because it was spherical like a pearl and it was golden in color. So he gave the name Sona Moti. Now, the Sona Moti obviously gives about 25% less yield per acre. But when at ICAR we tested for nutrition, it was 2.5 times more nutritious than the best of the hybrid wheats that are being grown in India. And what was even more fascinating was that it contained folic acid. Folic acid has never been, I am a wheat breeder, and we all try to get that gene to put folic acid in the wheat. We couldn't do it. The bread industry does it by putting artificial folate, and they say fortified bread, folic fortified bread. But that's not the natural thing. But this wheat has got folic acid in it, and it's incredible. Now, you have been a champion for seed sovereignty. And it is these indigenous races, these Desi Beej, which is ultimately our only hope to survive what we are going through as a crisis in nutrition and agriculture. I would like you to now take the next few minutes to create that awareness in us, what really is happening. How threatened is seed security in this world today? I want to take you back, Dr. Rao, to the fact that when the Green Revolution and chemical farming was spread around the world, of course, scientists like you were working sincerely to improve India's food security. But from the US, those who were pushing it had already declared that food is a weapon. And when you control food, you control the people. And when the tools of genetic engineering were taken from the public sector, where the public scientists had put a moratorium on their own work, they said, we know how to do it. We know how to shoot a gene and add a gene that doesn't belong to an organism. But we don't know what that means ecologically, and we definitely don't know what that means ethically. So we are going to put a moratorium on this work till we answer the broader questions. They put a moratorium, but once the techniques were known, the big corporations took the techniques and started to talk about
basically patenting the seed. Now, I happened to be at a meeting in 1987, which was about the emerging new biotechnologies. And the chemical industry was now saying, we're not making enough money, we need to make more. And the only way to make more is to control the seed. And to control the seed, we must do genetic engineering, not because at that time they weren't saying we'll increase yield or anything of the kind. They just said it's the only way to claim we've made something new. And then through that claim, take a patent on seed, through the patent, take royalties. But that's not enough, because we can do this in America and Europe, but most farmers of the world are in the South. So we have to get an international treaty, which became the Intellectual Property Rights Treaty of the GATT and WTO, that forbids farmers from saving seeds and requires that all seeds be patented. And when I heard them in 87, that's the day I decided I was going to save seeds. But that's the day I also decided I would follow what's GATT, General Agreement on Trade and Tariffs. Who knew about it? And Gurudev invited me long ago for addressing a huge 100,000 people gathering in Trivandrum on globalization, because he could see what's coming. So Intellectual Property Rights Treaty in WTO and GATT, the attempt to do genetic engineering in order to take patents. And they said by the turn of the century, meaning 2000, year 2000, 23 years ago, all seeds will be genetically engineered and patented. There will be no seed that is farmer's seed. And 4 companies will control food and health. That's what they declared at that time. Now, it is true that 4 companies are controlling most of the seed. 60% of the commercial seed is in their hands. But their aim was all of the seed. And because we said not just that we will save seeds and protect everything that is there, because we've created so much diversity. Look at the number of rices we evolved, the number of wheats. So Namoti you're talking about, the number of mangoes, the number of bananas, touch anything. And it's about diversity. So we said we're going to save every bit of it. But I also started to work with government and parliament. Because I used to give talks, the Minister of Agriculture called me and said, okay, we put in sui generis into the TRIPS agreement. So let's write a sui generis law on plant variety protection and farmers' rights, because we said farmers are the first breeders. So India is the only country which has a law which protects farmers' rights. And you might have noticed that Pepsi lost a big case because of this issue, because Pepsi wanted to fine farmers for saving potato seed. But Article 39 of this law says the farmer's right to save, exchange, improve, breed, sell seed can never be alienated. And then on the intellectual property side, because our parliament understood, they wrote a clause, Article 3J, that plants, animals, and humans are not human inventions. Not plants, animals, and seeds are not human inventions. In a way, to me, that's the meaning of Vasudhaiva Kutumbakam. We are one earth family. Other relatives are not machines we invent. They are relatives. And therefore, we cannot claim in having created them. And so therefore, they can't be patented. So Monsanto could never patent seeds. And they tried to challenge this Article 3J. And the last time I was in the Supreme Court, they were trying very hard. And the media is so much in their hands. They put out the news that they won and this article is struck down. No, they did not win. The article is still there. It is an embodiment of our civilization. It's an embodiment of our spiritual relationships with other life and other beings. So there is a huge threat, but there is also a huge opportunity. And the first opportunity is more and more people, through discussions like this, are becoming aware of the fact you want more food and nutrition, save the old seeds. That's where the food and nutrition is. You want more commodities to trade, use chemicals, use GMOs. But if you want to grow food that nourishes the earth and people, then use the ancient seeds, because they do not give you less nutrition. They just like our babies fed on breast milk are tiny, but they are absolutely robust. And the Nestle Dabbawala babies are nice and fat and sick all the time. So this is known that an artificial diet for humans is not a healthy diet, and the size is not what matters.
It's your immunity that matters, your resilience that matters. And the same applies to plants because the same principles apply. But I think there is, another part of the work that we in Afghania have been doing is that we are living through a time of climate havoc. And chemical industrial agriculture and globalized trade in food is responsible for 50%, 54% of the emissions. Let me read out the figures. 11 to 15% comes from the production. When you use chemicals, nitrogen, fertilizer, very, very energy intensive. And then they emit a nitrous oxide, which is 300 times more damaging to the climate than carbon dioxide. And of course, the bigger the farms grow, the more the machinery used. If you look in Brazil or you look in America, it doesn't look like farming. It looks like war as these giant combined harvesters move through these acres and acres of land, 15% from production, but another 15 to 18% by invading the Amazon, the Indonesian forest. Because when you reduce, when you treat food as food, there's a limit of how much you can take from the earth. There's a limit to how much you can eat. If you have a diet of 2 chapatis, you can't stuff yourself with 8. But when you're dealing with a commodity, you will grow more and more and find other uses. So 90% of the corn and soya, which is largely genetic engineered, and large parts is growing in the Amazon. That's where the forests are being destroyed. 90% goes for biofuel and animal feed. It is not for humans. So 18% from destruction of forests. Another 20% from taking healthy, good food, transporting it miles, processing it and packaging it and creating garbage all over. We keep talking about Swachh Bharat. We won't have a Swachh Bharat till we have Swachh food. Yeah, because the junk food, which is packaged and processed, is creating garbage outside. I did a very rough calculation once, just picked up stuff from a rubbish heap. About 75% was food packaging and wasted food. But that same garbage is garbage for our body. It's what's destroying our metabolism. 75% of the diseases today are chronic diseases related to food style diseases. And then if you look at the rest of it, 75% of the destruction of soil, 75% of the water destruction comes from an industrial system. And my assessment is, if you take the plants and the insects and the birds, we've lost 90% of the biodiversity that we had before the industrial agriculture. So with climate change, our native seeds are the resilient seeds. The native seeds are what can be resilient to drought. Just try and look. The Green Revolution plot fails if there's a drought. The native seeds stand there. If you have a flood, the native seeds survive the flood. Cyclones, we work in the Bay of Bengal, and we've distributed large amounts of native seeds that we had saved in our seed bank in Orissa. Now, among climate change, India is the most impacted, and the Bay of Bengal with its increased cyclones is heavily impacted. So the cyclones come and they bring salt water. But our farmers had evolved salt-tolerant seeds. We had some of them. We distributed them after the 99 Orissa cyclone. And then because our farmers have them, when the tsunami hit Tamil Nadu, the farmers of Orissa gifted 2 truckloads of native seeds that are salt-tolerant to the farmers of Tamil Nadu, who had been told 5-year agriculture holiday, you won't be able to grow food. And we said, no, but we have salt-tolerant seeds. And within a season, the agriculture had bounced back. So for nutritional security, for climate resilience, and for reducing your external input costs, because native seeds are bred for more life. They're tall varieties. They grow more food for the animals, so you can have more animals. And through the animals, you can have more animal energy. Through the animals, you can have more organic manure. And all of this, if you look at the cycles, if you map these cycles, the true productivity lies in our native seeds, not in the varieties bred for tradable commodities. So beautiful, so beautiful. We also have in the audience a large number of our farmers.
and they are a little more comfortable with Hindi. So if possible, we will speak. जरूर बात करेंगे क्योंकि हमारे किसान भाई लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदी समझ में आता है अंग्रेजी से बेहतर. तो हम अभी ये आधा सेशन जो है हम थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बात करेंगे. तो वंदना जी, आपने ये बहुत ही ब्यूटीफुली बताया कि देसी बीज का रक्षण और देसी बीज का कल्टीवेशन आगे क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसका तो आपने क्लियर पिक्चर दिया. अभी गुरुदेव भी अपना एक राष्ट्रीय बीज कोष का इनॉग्रेशन किया था लास्ट नवरात्रि पे, जहां उनका एक विजन है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में एक बीज कोष रहे और उधर की जो भी देसी बीज है उनको इकट्ठा करे, उनको मल्टीप्लाई करे और फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे. ये कोशिश अभी आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से अभी चालू हो गया है. अभी हम 22 लाख किसानों के साथ जुड़े हैं आर्ट ऑफ लिविंग, और हमारा एक समस्या है वंदना जी, और इसके लिए आपकी एक मार्गदर्शन चाहिए हमें. जहां भी हमारे किसान लोग अपने उत्पादन प्राकृतिक खेती के द्वारा उगाए हैं, आपको पता है कि हमारा प्राकृतिक खेती का जो उत्पादन होता है वो दिखने में इतना सोफिस्टिकेटेड या अट्रैक्टिव नहीं रहता, जहां की जीएमओ या हाइब्रिड. जैसे बीटी ब्रिंजॉल ले लीजिए और हमारे देसी ब्रिंजॉल आप इसको देखिए तो तोल मोल तो बहुत फर्क है इनमें. लेकिन हमें पता है कि देसी उत्पादन को खाने में हमें पौष्टिकता कितना मिलता है, हमारा परिवार के आरोग्य के लिए कितना महत्व है ये. लेकिन फिर भी एक कंज्यूमर प्रेफरेंस जो सुपरमार्केट में जाके जो खरीदते हैं, उनके माइंडसेट इतना एक मोमेंटम से बदलावट उसमें आया नहीं है. तो हमारी फार्मर्स का ये एक बड़ा समस्या है कि हमने इतना मेहनत करके इसको उगाया है, प्राकृतिक खेती अपना के जो है इसको उगाया है, लेकिन हमें इसका जो एक मूल तोल मिलना चाहिए, जो एक रिटर्न मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है. हालांकि लोग इसको थोड़ा कम पसंद करते हैं. इसको ये माइंडसेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वंदना जी? जिस तरह पहले किसानों को माइंडसेट बदला था कि क्यों कोशिश कर रहे हो धरती माँ को प्यार देने की, फेंको ना यूरिया, स्प्रे करो अपना पेस्टिसाइड. तो किसान लोग उस माइंडसेट से निकले हैं और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. उसी तरह इसी आंदोलन का भाग हमें खाने वालों का होना, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले कि पोषण और अन्न से ही सृष्टि चलती है और पोषण और अन्न से ही समाज चलता है. अभी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को बिल्कुल अलग कर दिया है और उनके बीच में टकराव कर दिया है. और अब सिंपल चीज होती है, टमाटर के दाम महंगे होते हैं, ऐसा दिखाया जाता है कि किसान को मिला पैसा. किसान को कहाँ मिला? किसान को तो अभी भी फेंकना पड़ता है. तो हमको अब जिस तरह हमने खेती में और कृषि में ध्यान से हमने रिश्ता जोड़ा बीजों और मिट्टी का और पौधों का और प्लांट्स का और धरती की केयर का, यही प्राकृतिक खेती है. तो अब हमें रिश्ता जोड़ना पड़ेगा खाने वालों के बीच और उगाने वालों के बीच. और वो रिश्ता सुपरमार्केट में नहीं बनता है. सुपरमार्केट में तो रिश्ते नहीं बनते. सुपरमार्केट को बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती हैं और वो हमको एक धरती परिवार में सोचने की जगह वो हमको एक कंज्यूमर बना के छोड़ देती है. तो कंज्यूमर जैसे एक ब्यूटी होती है जो सरल होती है, और वो ब्यूटी आती है अंदर के रेडियंस से, वो ब्यूटी आती है आंखों में प्यार से. और एक होती है लिपस्टिक लगाओ और यहाँ रूज लगाओ और यहाँ डेकोरेशन करो और थोड़े खा लो. पहले
काले बाल हम पसंद करते थे, आजकल सब तीसरी बच्ची ब्लॉन्ड हेयर पकड़ी है। तो जो सुपरमार्केट फूड है, इट्स अ बिट लाइक ब्लीच्ड हेयर एंड अ पेंटेड फेस, इट्स अ कॉस्मेटिक अपीयरेंस। तो अब हम वो समाज तो नहीं है ना जो भारी दिखावे पे जाते हैं। हम तो वो समाज है कि अंदर क्या है, इंसान के अंदर क्या है, खाने के अंदर क्या है, पोषण क्या है। तो हमको आंदोलन के रूप में देसी बीज का बचाना, जैविक प्राकृतिक की खेती का बढ़ाना और जैविक खाने को खाना। और इसके लिए मैं थोड़ा आपको डेटा देती हूँ। और ये जो हमारे पास किताबें हैं, जब जब मैं आती हूँ आश्रम में तो हमेशा किताबें लाती हूँ, पर ऑफ कोर्स नई नई किताबें बनती रहती हैं। मैं दो चीजें अपने किसान भाई बहनों को बताऊंगी कि हमने जैसे हेल्थ पर एकड़ कैलकुलेट करा और कि 2 भारतवर्ष को पूरा पोषण मिल सकता है। हमने वेल्थ पर एकड़ करके किताब कि रासायनिक खेती से क्या कॉस्ट है। एक 1.3 ट्रिलियन बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नलिटीज है। किसानों का डेट, किसानों का सुसाइड, गाय का मरना, मिट्टी का खत्म होना। पर जब हम देसी बीज के साथ जैविक खेती करते हैं और हमने उसे कैलकुलेट किया है, जो किसान खरीदे हुए बीज के साथ कमोडिटी प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि आप जब कैश क्रॉप उगाओगे कमर्शियली और उसको केमिकली उगाओगे, आपका आमदनी बढ़ेगा। पर वो तो लॉस का काम है, क्योंकि आपको बीज के लिए खूब पैसा देना पड़ता है, आपको केमिकल्स के लिए खूब पैसा देना पड़ता है, उन बीजों में बीमारी बहुत लगती है, पेस्टिसाइड खूब इस्तेमाल करना होता है, और आखिर में थका हुआ किसान उसी पेस्टिसाइड को लेके अपनी जान ले लेता है। 4 लाख किसानों ने जान ली है इस देश में। तो हमने वेल्थ पर एकड़ में देखा है कि जब हमारा बीज स्वराज है, अन्न स्वराज है, ज्ञान स्वराज है और आर्थिक स्वराज है, कि मार्केट पे को भी हम शेप करेंगे रिश्तों के द्वारा। नवदानिया ने ये ही किया है। हमने किसानों को खाने वालों से जोड़ा है सीधे। वो किसान जो देसी बीज इस्तेमाल करके जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वो 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। लक्ष्मी भी आती है साथ, 10 गुना ज्यादा। तो किसानों को वो भी देखना है। कंज्यूमर्स के लिए ये उनको हमको सबको पहुंचाना है कि आप सस्ता खाना, रिबेट खाने, सुपरमार्केट्स में 5% लेस, 50% ऑफ, हर चीज को 50% ऑफ कर देते हैं। इसका मतलब कि कितना मुनाफा है उनके पास। उस टाइम कंज्यूमर सोचता नहीं है कि मैं जब सस्ता जहरीला खाना खरीद रहा हूं या खरीद रही हूं और उसमें कुछ नहीं है, देखने में बड़ा प्लास्टिक के साथ वॉशिंगटन एप्पल अच्छा लगता है, पर जब मैंने खाऊंगी, ये सब खाऊंगी, तो मेरे स्वास्थ्य को क्या हो रहा है, वो स्वास्थ्य का कॉस्ट क्या है। इफ यू गिव मी परमिशन, आई जस्ट रन थ्रू। जब से इंडस्ट्रियल फूड और प्रोसेस फूड भारत में फैला है, क्रोनिक डिजीजेस फैले हैं जो पहले नहीं होते थे, और होते थे तो 1-2 लोगों को होते थे। मेरे बचपन में एक हमारी जानने वाली लेडी थी जिनको कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर, पर ब्रेस्ट कैंसर के बावजूद वो 90 साल तक जी। किसी के पास कैंसर नहीं था। आज किसी से बात करो, छोटे छोटे बच्चों को, छोटी उम्र के लोगों को, 40 साल के, 35 साल के लोगों को कैंसर हो रहा है। हर परिवार में कैंसर, हर परिवार में। और कैंसर इन जहरीली वस्तुओं से रिजल्ट है। 5% कैंसर जेनेटिक है, 95% जहर से आ रहे हैं, हमारे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से आ रहे हैं, पेस्टिसाइड से आ रहे हैं। तो ये सबको मिला के कॉस्ट क्या है? भारत में कैंसर का कॉस्ट $2.5 ट्रिलियन पर ईयर, साल भर में। डायबिटीज जो पूरी तरह फूड से रिलेटेड है, $2.5 ट्रिलियन। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन 249 बिलियन। इनफर्टिलिटी सब जगह फैल गई है, हर जगह तो फर्टिलिटी क्लिनिक्स फैल गए हैं, 3.6 बिलियन। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस, एंटीबायोटिक्स भी इंडस्ट्रियल फार्मिंग के साथ आए हैं, 1 ट्रिलियन। ओबेसिटी 1.2 ट्रिलियन।
birth defects 22.9 billion, neurodegenerative disorders, क्योंकि जो धरती खाना देती है हमें, पौधे उसको प्रोसेस करते हैं, फिर हम खाते हैं, हमारा गट माइक्रोबायोम में वो प्रोसेस होते हैं। जब हमारे गट माइक्रोबायोम में हमने विविधता खानी बंद कर दी और जहर खाना शुरू कर दिया, तो गट माइक्रोबायोम डैमेज होता है। जब गट माइक्रोबायोम डैमेज, उसका सीधा रिश्ता हमारे ब्रेन से है, गट ब्रेन कनेक्शन, ये साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड है। सीधे किसी को पार्किंसंस, किसी को ऑटिज्म, ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस 2.5 ट्रिलियन। ऑटिज्म अलोन जो बढ़ रहा है 171 बिलियन। तो हमें उपभोक्ताओं में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि अब तुम एक जैविक किसान को, एक प्राकृतिक किसान को जो देसी बीज बचा रहा है, वो हमारी संस्कृति भी बचा रहा है, हमारी धरती माँ भी बचा रहा है, पर सब में बड़ा वो आपका डॉक्टर है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर इतनी सारा पैसा खर्च कर रहे हो, खाने पे इतना सा बचा के, और फिर सारा लुट रहा है। हर दूसरी फैमिली ने जमीनें बेची हैं, घर बेचे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो आप डॉक्टर की तरफ मुड़ो। असली डॉक्टर वो धरती है और वो किसान है। और ये जब रिश्ता और ये ज्ञान बन जाएगा। और मैं एक और चीज बताऊं, मेरे को 3 वेरी फेमस डॉक्टर्स ने बुलाया है अलग अलग टाइम पे। लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट ऑफ इटली, स्टडीज की, एनालाइज किया, आखिर में वो उन्होंने कहा खाना ही है। जाके वो ऑर्गेनिक फार्मर बने। लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी लेफ्ट द सिटी, हिज क्लिनिक इज एन ऑर्गेनिक फार्म। तो अगर डॉक्टर ये कर रहे हैं, तो हमारे असली डॉक्टर जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उन्हें उनकी पहचान एक हेल्थ पहचान करनी होगी। हमें नैरो इकोनॉमिक इक्वेशन नहीं, हमें एक धरती के रिश्ते और स्वास्थ्य के रिश्ते, इसके द्वारा जब हम रिश्ते बनाएंगे तो बहुत आसानी से लोगों की जागरूकता फैलेगी और वो दिखावे की तरफ नहीं जाएंगे, वो असलियत की तरफ जाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस पे मार्गदर्शन दिया कि ये जो आपने एक बहुत ही स्पष्ट बात बोला है कि सुपरमार्केट कंज्यूमर को, फार्मर को सेपरेट कर देता है। उसमें एक डिवीजन हो जाता है, फार्मर कहीं और प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर कहीं और खाता है, इनमें कोई कनेक्शन नहीं रहता। मुझे याद है जब मैं अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहता था, बच्चे जब व्हेन आई वाज अ किड, हमारे घर को जो पेरी अर्बन फार्मर्स थे अराउंड बैंगलोर में बहुत सारी वेजिटेबल्स की अच्छी ग्रोथ होती थी। तो फार्मर्स देमसेल्व्स शाम को वो ले आते थे उनकी प्रोड्यूस, और ले आके बात करते थे दादी माँ से, और बोलते थे कि अच्छा, दादी माँ बोलती थी कि आजकल थोड़ा सा खसी ज्यादा हो गया। अच्छा, खसी ज्यादा हो गया, मेरे फार्म में अभी ये उग रहा है, मैं कल ले आऊंगा। यानी दे न्यू दी नेचुरल रेमेडीज, एंड वो फार्मर खुद ले आके नेक्स्ट डे वो कुछ ग्रीन्स या कुछ पत्ते वगैरह ले आके देते थे, उसका एक कषाय बनता था और दादी माँ हमको खिलाती थी। माने कि इतना एक क्लोज रिलेशनशिप था ग्रोअर और कंज्यूमर का। लेकिन जो कॉमर्स इधर आके इनको सेपरेट किया है, इसकी वजह से जो है एक, तो आपके मार्गदर्शन में एक चीज स्पष्ट होता है कि हम ऐसी एक कुछ कैंपेन्स करना चाहिए जहां कंज्यूमर और फार्मर को अच्छी तरह से हम नजदीक ले आए इनको, और एक अच्छी संबंध इनके आपस में क्रिएट करें। I think this is one of the very important absolutely. things that you have highlighted. Thank you so much for this. My last question to you before we go on, एक बहुत ही भयंकर एक मूवमेंट शुरू हो रहा है, एंड दिस इज इवन पोस्ट जीएमओ एंड ऑल दैट, जहां जीएमओ को इतना इन्होंने हल्ला मचा दिया कि जीएमओ के बिना उत्पादन नहीं रहेगा, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन को, जो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन को केटर कर पाएगा, ऐसा करके जो है उन्होंने जस्टिफाई कर दिया जीएमओ को। लेकिन आजकल एक बहुत ही भयंकर चाल चला है जहां लाइफ फॉर्म्स, माने कि इवन माइक्रोब्स, which as you say, जो हमारी धरती में, which are fundamental for the life and health of the soil and the human beings,
इनको भी they want to somehow patent or they want to somehow control the sovereignty and ownership of life forms. इसके कुछ, I mean, when I read something like this, I'm aghast. I simply question, how can anybody think like this? But you are in the loop, you know what is happening. अभी दुनिया में क्या हो रहा है, आपको बहुत अच्छी क्लोज नॉलेज है. इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, हमें मार्गदर्शन दे दीजिए कि व्हाट शुड बी आवर स्टांस. ऐसी कुछ हो रहा है क्या, एंड इसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? आम आदमी, आम किसान क्या कर सकता है? पहले तो कहा गया कि मिट्टी एक एम्प्टी कंटेनर है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डालो तब कुछ उगेगा. पर धरती में तो इतने सारे माइक्रोब्स हैं. इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट इकोसिस्टम्स. इसमें बायोडाइवर्सिटी ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया और एक वेब है जो एक दूसरे के साथ रिश्ता करता है. पहले they ignored the gut. Now that we know that trillions of cells, they want to engineer the gut, they want to engineer the soil organisms. अब billions or trillions को तो engineer कर नहीं सकते. Engineering is something you do from outside. Life is something that is worked as self-organized inside the relationship. So it is true that there are new attempts to do genetic engineering of microbes, both in the soil as well as in the gut. And there's a second attempt कि जो laws हमने बनाई थी कि कुछ भी आप genetic engineering करो तो उसका impact समझना जरूरी है. और वो impact समझने के लिए independent government agencies और public systems उन्हें करना होता है. इसको हम biosafety कहते हैं. और मुझे यूनाइटेड नेशंस ने अपॉइंट किया था पहले ये बायोडाइवर्सिटी लॉज लिखने, बायोसेफ्टी लॉज लिखने के लिए. अब ये माइक्रोब्स को भी इस बायोसेफ्टी असेसमेंट में आना चाहिए. पर एक डीरेगुलेशन का एक हवा फैली हुई है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ असेस मत करो, हमें पूरी तरह फ्रीडम दे दो. इसी को फ्री ट्रेड कहते हैं. वो हम जो कुछ चाहें करें, सृष्टि को जिस तरह हम खराब करना चाहें करें. एक तरफ माइक्रो रिपोर्ट गए, क्लाइमेट चेंज के एक फॉल्स सॉल्यूशन है, जियो इंजीनियरिंग. हम पूरा का पूरा सिस्टम को पोल्यूट करके, हवा में एरोसॉल्स डाल के, प्लेन्स के साथ पोल्यूशन डाल के मौसम बदलेंगे, बारिश अपने मन से करेंगे. यूएस एजेंसीज आर टॉकिंग अबाउट ओनिंग द वेदर एज अ न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर. और क्लाइमेट चेंज का तो है ही प्रभाव, पर ये जो मैनिपुलेटेड वेदर सिस्टम, इसका भी आजकल जो नई सोच, एक एम्पीरियलिस्ट सोच है जो अदर्स कंट्रोल करने के लिए है, वो सोच है. उनका स्लोगन है फार्मिंग विदाउट फार्मर्स, फूड विदाउट फार्म्स. किसान के बिना खेती, खेत के बिना खाना. और ये जो विजन है, डिस्टोपिया है, इसमें ऐसा इस तरह है कि कुछ कंपनियां आर्टिफिशियल फूड, लैब फूड बनाने में लग गई हैं. जैसे कि एक मीट बर्गर बनाया है जिसका नाम है इम्पॉसिबल बर्गर. वो सोयाबीन से बनता है और लैब में फिर एक लैब का एक खून बनाते हैं और खून डालते हैं. मैं कहती हूँ अगर तुम वेजिटेरियन और वीगन बनना चाहते हो तो खून क्यों डाल रहे हो? हाँ. और अगर तुम्हें नॉन वायलेंस चाहिए तो तुम जीएमओ सोया को फैला के सब कुछ खत्म कर रहे हो और खूब खुश होकर अच्छा खा रहे हो. नहीं, दैट्स वायलेंस, दैट्स पार्टिसिपेशन इन वायलेंस. पर मोंसेंटो जो अब बायर कंपनी है, वो ही ये माइक्रोब्स का इंजीनियरिंग में सब में आ गए हैं. पर उनने कहा है कि ये जो फैशन बन रहा है फर्जी खाने का, लैब से आया हुआ खाना, वो खाने को भी तो फीड स्टॉक चाहिए ना, उसे भी तो कुछ खाना चाहिए. तो उसके लिए हम जबरदस्त बड़े बड़े फार्म्स बनाएंगे जो ड्रोन से मैनेज होंगे, जो डिजिटली मैनेज होंगे. किसान की जरूरत ही नहीं है हमें. और खाने की जगह मैं अभी खेत में जाके आलू निकाल सकती हूँ, गाजर निकाल सकती हूँ, खा सकती हूँ, साग निकाल सकती हूँ. सप्पू सप्पू कह के आती थी महिलाएं बैंगलोर में, वो हम खा सकते हैं. पर अब वो खाना नहीं होगा, वो रॉ मटेरियल होगा, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स एज फीडस्टॉक फॉर द लैब.
अब ये तो फिर से उसी तरह कि अरे हम और उगाएंगे और उगाएंगे और उगाएंगे। अभी नया रिसर्च आया है कि जब आप लैब से बनाओगे आपको फीडस्टॉक 5 गुना ज्यादा चाहिए होगा, 5 गुना ज्यादा। और ये सब एक भ्रम फैलाया जा रहा है क्लाइमेट चेंज के पीछे कि ये क्लाइमेट सोल्यूशन है, फर्जी खाना क्लाइमेट सोल्यूशन। किसानों को खत्म करो, खाने को खत्म करो, पोषण को खत्म करो, खाने की संस्कृति को खत्म करो। अभी एक नया रिसर्च आया है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कि ये किसानों के बिना खेती और लैब का फर्जी खाना 25 गुना ज्यादा क्लाइमेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करेगा। तो हमको इसलिए असली विज्ञान की तरफ मुड़ना है अब। और हमारा विज्ञान हमारी संस्कृति में है, हमारे आयुर्वेद में है, हमारी वैदिक खेती में है। वो विज्ञान को हम खो नहीं सकते। हमारी हर नानी दादी एक वैज्ञानिक है, खाना कैसे खाओ, जैसे अन्न वैसा मन कहती थी, है ना? जो the food we eat is what makes us. There's a huge assault on what food will be in the future. Now, food is not something you invent out of the blue. Food is not just a continuum of history and evolution. It is, as I said, the currency of life. Everything is food. Everything is something else's food. That integrity and maintaining that flow and that relationship is what the food system really is about. And that's why a spiritual movement like Art of Living becoming such a big player in the art of growing good food and eating good food, that is where we will shape our future. A sovereign future, a future of Swaraj and Swadeshi, and a future that takes care of all of the earth and resurrects and regenerates our amazing civilization. So thank you so much for organizing this session. Thank you so much, Vandana ji, and I salute you. And for all my listeners, I would like to share, I follow Vandana ji very closely. If the patent law for plant patent in India has been stalled, she has had a huge role to play in this. And let us all clap and salute her for the wonderful work that she has done. We need people like her at the gates to stop this invasion of the multinational. And thank you so much. It's been so enlightening and so energizing to always be with you. You're a woman of that true Nari Shakti shines through you. And what you said कि हमारी देश में beauty अंदर से glow होता है. We see that in your face every day, Vandana ji. We are so grateful to have you in our lives. Thank you very much. Abhi, Thank Sudhir you so ji, much, Dr. Rao, and to everyone in the team. Thank you. vote of thanks कर दीजिए सुधीर जी. थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। आज हमें इस आपके दोनों के डिस्कशन से बहुत अच्छा सीखने को भी मिला है और कुछ टैगलाइन भी हमें मिली है, जैसे अगर स्वच्छ फूड है तो ही स्वच्छ भारत बनेगा और असली डॉक्टर असली धरती है। तो वापस धरती की तरफ हम जाना चाहेंगे। इस वेबिनार में नैसर्गिक खेती में काम करने वाले बहुत अच्छे लोग, बहुत सालों से काम करने वाले जुड़े हैं। आज अपने साथ अंकुश दादा भी है, वो कुछ 2 लाइन बोलना चाह रहे हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूँ अंकुश दादा को। अंकुश दादा आपण आहेत? Ankush Dada is a co-host. I can't see Ankush Dada Balekar. Yes. Unmute, yeah. Yes. Please go ahead. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वंदना जी आज हमको बहुत इंस्पायर किए हैं। मुझे लगता है ऐसा महात्मा गांधी ने कभी तो भी अकेले उड़ गए अंदर से और इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल कर दिया भारत को स्वतंत्र करने का, वैसा ही आप और श्री श्री रविशंकर जी मिलके ये जो आज का डिस्कशन हुआ है उसको अगर आपको कुछ रियलिटी में लाना है, आप दोनों ये दुनिया में ये दोनों लोग मुझे दिखते हैं जो ये कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये आज के हिसाब से आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुजी को प्रार्थना करूंगा कि गुरुजी आपको अभी मन उनको
समझ गया है। और ये दिशा में जो काम करना है ना, उसके लिए पूरे दुनिया से ऐसे जो भी नैसर्गिक खेती के चाहने वाले निसर्ग प्रेमी है वो सब आएंगे। मुझे लगता है आपने ये काम हमारा सुनना चाहिए। बस यही मेरे को विनती करनी है। जय Thank you, गुरुदेव। Anish. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। थैंक यू अंकुश दादा, थैंक यू। Thank you. लास्ट वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सुहास जी को इनवाइट करता हूँ। सुहास जी वोट ऑफ थैंक्स करें और प्रोग्राम कंक्लूड हुआ है घोषित। Tanushree, you are host now. You can spotlight him and unmute him. सुहास वीर जी। जय गुरुदेव। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ऐसा कहा गया है कि ज्ञान जैसा पवित्र इस दुनिया में और कुछ नहीं है। और ये ज्ञान की गंगा जिन्होंने हम सबको आज दी, वो हमारे प्रेरणा स्थान SSIAST ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे गुरुवर्य श्रीयुत राव सर, इन्होंने बहुत बढ़िया हम सबको मार्गदर्शन किया। इसलिए हम सब महाराष्ट्र के सब JTC STC सब टीचर्स आपके सब बहुत ही आभारी है। इसके साथ बहुत ही अमूल्य ऐसा नॉलेज हमको डॉक्टर वंदना जी ने जो दिया वो बहुत मूल्यवान है। जो गुरुजी ने जो संकल्प लिया है कि बहुत सारे लोग हमारी राह देख रहे हैं और इसकी हमें इंस्पायरेशन मिला। इसके हमें जानी हुई कि बहुत सारे लोग हमारी राह देख रहे हैं। तो हम महाराष्ट्र की टीम से SSIAST की तरफ से वंदना जी का बहुत बहुत आभारी है कि वो हमारे बीच में आई और आपका अमूल्य हमें जो ज्ञान आपने शेयर किया, इसके लिए सब महाराष्ट्र की टीम आपकी बहुत बहुत आभारी है। इसके साथ हमारे प्यारे और हमारे सभी को हर टाइम मार्गदर्शक जो रहते हैं, वो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर भैया भी, सुधीर भैया हमारे साथ ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज उन्होंने किया। अरुण सिंह जी राठौड़ भैया हमारे हर टाइम हमारे लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। वैसे आप सब लोग ZTC सब सब टीचर्स, सब महाराष्ट्र के सब सीनियर टीचर्स, सब सीनियर जो है टीचर्स, वो सभी का मैं महाराष्ट्र की टीम से बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऐसा ही मार्गदर्शन और गुरु का संकल्प पूरा करने के लिए आप लोग हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहे और हमेशा हम लोग आपकी और गुरु का संकल्प पूरा करने के लिए हम लोग आपके साथ है। इसी के साथ आप सभी का पुनः मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरु। गुरुदेव। थैंक यू राव सर, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू, वंदना जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।